Um, Today we are going to start with a new topic, and since we have finished up with the SQL and databases, we'll start up with a new topic today. I'll quickly go to the screen that I wish to show to you people. You can see here this topic is operating web. Now in this topic we'll cover up all the applications that are available on internet, which people can use and utilize for a better working. Fine. So we'll try to learn up various things in this chapter. Okay, let's start with it. Now the very first thing we need to know is of first subtopic is operating web-based applications. How do we access web-based applications? Web-based means the applications that are available on internet that we can access through a browser. So all the applications that we access via a web browser are called as web-based applications. तो जितने भी applications हम लोग online access करते हैं, all these applications are basically your web-based application. And what are the advantages of using such services? The most common advantage is that these services, they are available 24/7, so you can access these services anytime, anywhere. And moreover, other features are also there. A lot of advantages of using it. Cost is reduced, services are available at doorsteps, right? And a lot of other things, other advantages are there. We'll discuss one by one afterwards. Nowadays, web applications are used like, for example, it is written as reservation of tickets, online ticket bookings. Then e-governance services. E-governance होता है जिसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज को हम लोग easily access कर सकते हैं. And online shopping we can do. We can make payments of different kinds using your debit card, credit cards, and even online banking. We can learn online. We can conduct some tests online, right? Um, so while sitting at your home, if at your office, you can access a lot of facilities from internet. Now, web-based applications are categorized into two categories. First is the financial online transactions, and second is where information and certain things are allowed, right? So financial online transactions where money is involved, where you can buy and sell things online, and other are just for information, like you can pass on certain information or you can allow interaction between different customers, right? So what kind of information we can pass? We can fill forms, post query, sending email, chatting. All these services are also available. Fine. Now we'll talk about one by one what all services we can use on internet. The very first thing is online reservation system. Online reservation means you can book a ticket or cancel a ticket using internet, right? So moreover, we can get information about the latest things, latest options available, right? What all we can make comparisons with the different prices, right? You can just scroll down and find out which one is the best possible uh, option available for you people. So ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या आएगा? एयरलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, मूवी, होटल, कार रेंट कर सकते हैं, टूर ट्रैवल बुकिंग वी कैन डू. These are all on online reservations, right? um, so such system stores information. So they have information and they allow the users to get that information. For example, information about all the flights from Delhi to Mumbai. Like if you want to check out how many flights are available from Delhi to Mumbai, that you can check out with the help of certain company sites like Air India, SpiceJet, these kind of sites. Or sometimes we are available with certain websites where
you people can simply compare the services of different companies, right? We'll do one afterwards also. So that's it from this thing. Now I'll come to the important topic over here. What are the advantages of such system? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है? फर्स्ट है कन्वीनियंस, कि कस्टमर कैन बुक टिकट्स एनी टाइम एनीवेयर, फ्रॉम होम, फ्रॉम ऑफिस, वाइल ट्रैवलिंग. सो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि आप कहीं पे भी, कहीं किसी भी टाइम पे आप उसको सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हो. सो देन इट सेव्स योर टाइम. You don't have to go physically to a office or to some shop for getting the things done, and you have to stand there in queue in booking offices. तो लाइंस में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, हम घर पे बैठे बैठे ही बुकिंग कर सकते हैं, right? Then you can make changes in the booking, like if I have done a booking, I want to cancel it, or I want to change it, upgrade it into some other way, so that can also be done online very easily, right? And it is very useful for the person with special needs. Person with special needs is the person who cannot walk or who has some physical problem. So उनके लिए बहुत beneficial है कि वो आराम से easily services को access कर सकते हैं. Next is comparison of prices. As let's take a simple example, like if you want to book a ticket in your in cinema. So movie ticket book करनी है तो you go to many of the sites where you can check the price, you can compare the price and find the best deal for you people, so that you can use that service. ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि कंपैरिजंस मिल जाता है प्राइसेस का और सर्विसेज का, ताकि हम लोग अपने बेस्ट जो सूटेबल है वो चूज कर सके, राइट? For example, if you go with makemytrip.com, now this is a website where you can plan some trips, you can book tickets also. Now it provides pricing of air tickets, right? You just have to fill up your source and destination, कि आपको फ्लाइट कहाँ से लेनी है और कहाँ पे जाना है. सोर्स डेस्टिनेशन फिल किया, and then you'll get the list of all the flights which are available with their prices, with their services. ठीक है, as you can see here, right? So once you fill up your destination and your source of flight, so you'll get the list of all the, जैसे स्पाइस जेट की इतनी है, गो एयर का इतना है. So we'll get the prices, duration, arrival, departure, all such information regarding all different flights available of different companies. Now you can compare which one is the best for you people, right? Or then you can book that from this book option, right? The next thing is this online reservation system also provides you security features, because see nowadays for all such kind of services you have to create a user ID and password to access. जैसे मेक माई ट्रिप ही है, या फिर IRCTC साइट है रेलवे रिजर्वेशन के लिए, देन देयर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर यूजिंग इट. आपको एक ऑनलाइन लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको किसी ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. आफ्टर रजिस्ट्रेशन देन यू कैन use your username and password to access, right? So it's quite a secure system for accessing the services. So security features also there. Then is confirmation of reservation. Once you are done with the booking, the confirmation of the booking just takes a few seconds. It's a fast and secure method, right? जैसे आप टिकट्स बुक करते हो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स विल गेट द कंफर्मेशन मैसेज. आपको एक कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी आ जाएगा. जैसे टिकट बुक किया तो टिकट का PDF you can create, or you can transfer that PDF into your mobiles also, or you can take a printout of that particular page also. So you'll get confirmation instantly. Then we can make choices over here. In online booking, users can see the arrangement of seats, right? Like if you want just a railway reservation, if you are not comfortable with upper berths, so you can select, and while booking it, you will prefer to go with the lower berth only. So आपको लोअर बर्थ में ही आपको कोई सीट कंफर्म करके मिलेगी. ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपने प्रेफरेंसेस वी कैन गिव while making online this thing. Or if you want a window seat, so that option is also there of window seat.
वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको विंडो के पास वाली सीट ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे प्रेफरेंसेस चॉइसेस यू कैन मेक while booking things, right? And moreover, preferences may type of food required. If you want like in railway booking, type of food, you want non-veg or you want veg, such kind of options are also there. And do you need a beddings, you need a bedding also, so that option you can select. So yes, such choices are also available. Then online reservation consumes very less time as compared to going to some booking office for getting it done. So बुकिंग ऑफिस पे जाके हमें क्यूज में खड़ा होना पड़ेगा, लाइंस में लगना पड़ेगा, सो उससे बहुत कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली. एंड मोर ओवर we'll also get discount schemes. Nowadays there's a lot of competition between different organizations or those who are giving you services. So उसके चलते वो बहुत सारे डिस्काउंट स्कीम्स भी देते हैं. ठीक है, सीजनल डिस्काउंट्स हो तो उस डिस्काउंट से हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है. राइट, इफ़ यू डू एनी काइंड ऑफ बुकिंग इन एडवांस, तो एडवांस करने में कुछ डिस्काउंट वो ज़रूर देते हैं. डिस्काउंट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट. देन इज advantages for providers. Now these whatever we have just gone through, all these are advantages of the person who is using the services. Now we'll cover up the advantages of the person who is giving such services to us. जो organizations हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? उनको एक तो पहला फ़ायदा है, they requires less staffing, less number of manpower is required. So for doing any kind of task, like if I'm running a business of a railway reservation system, let's say, so I don't need any person to go and get the things booked from my side. मुझे किसी पर्सन की मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन प्रोसेस को मॉनिटर करके ही बुकिंग करवा सकता हूँ. ठीक है, तो मैन पावर कम लगती है, स्टाफ कम लगेगा, because most of the things are done with the help of computers only. Then is no special restrictions are there. Organization which is providing online reservation may be operating from the basement of the house. There's no place, we don't require some particular physical location only. जैसे ऑफिस है तो आपको ऑफिस किसी अच्छे एरिया में बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप घर पे बैठे भी अपने ऑफिस घर के अंदर स्मॉल बिल्डिंग के अंदर भी बैठ के यू कैन डू द वर्क, राइट, सिंस there is no, it is not location specific, right? So that also gives us very बेनिफिट. लाइक अब घर पे या अगर आप कर रहे हो कुछ ऑनलाइन काम, तो उससे बिल्स वगैरह का खर्चा कम होगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम हो जाएंगे. तो all the initial and overhead costs will be reduced. Then is a global access. See, if I'm running a business, if that business product is only available in my area, like for example, if I'm running a shop, तो शॉप चला रहा हूँ तो शॉप पे तो सिर्फ जो लोकल एरिया के लोग हैं वही आ सकते हैं. बट इफ यू गो विद इंटरनेट, देयर द सर्विसेज कैन बी गिवन टू एनी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, तो आपको लार्जर एरिया मिलता है जहाँ पे हम लोग लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं. सो वी हैव ग्लोबल एक्सेस ओवर हेयर, right? So online reservation is available to anyone irrespective of their locations. Okay, then is what are the precautions we required while performing online transactions? So whenever we are going with online transactions, so some things we must keep in mind to be safe, right? So किसी तरह का कोई problem ना आए. First of all, the username and password that you people are using, it should not be a common username password. So all the passwords and username must be mix of cases. Cases means it should be, some letters should be capital, some should be small. You should use a number in between, you should use a special character in between. इन चीज़ों का मिक्सअप होना चाहिए. ठीक है, उससे क्या होता है कि ability of some attack is reduced. ठीक है, गेस करना लोगों के लिए मुश्किल होगा. ठीक है.
And be conscious always that do not leave your passwords around. Don't give your password to anybody. Do not share it to any of your friends also. अपने password अपने पास रखो, share मत करो. Never use names of near and dear ones as password. आप अपने आसपास के लोगों के या family members के लोगों के नाम passwords में मत रखो, क्योंकि that can be easily guessed by anybody if they knows you. ठीक है, तो these are some of the things we must keep in mind while going for any kind of online transactions. Now we'll learn about how to use online reservation system. कि हम लोग कैसे करते हैं online reservation. See, online reservation sites, if you know the site, then it is okay. Then the thing is that you have to just go to the address bar of the browser, whichever you are using, Chrome हो, Explorer हो, Mozilla हो. ब्राउजर के एड्रेस बार पे जाओ, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस टाइप करो एंड प्रेस एंटर. And if you don't have the address of any particular site, you're not aware about it, then you go to the search engine like google.com. There you can search upon any of the things, like if you want to book a ticket, let's say Air India ticket. So like as you see here in the figure also, Google पे जाके search किया Air India ticket booking, so you'll get a link, makemytrip.com. This is via.com, that's airindia.com. So you'll get such kind of links. So whichever you want to open up, you just click on the link and that particular page will be open, and then you can access the services, right? That website will open, browse and search for the required information, whatever you want to search, just browse for that. You can search it there in the search bar also, and then you can do the reservation. Now how we do this reservation? There's one case study given here where we are using IRCTC website. IRCTC is the official website of Indian Railways. So how do we use it, and how can we book a ticket? So we'll be given with some screenshots. I'll share it right now. IRCTC is Indian Railway Catering and Tourism Corporation. So this is the government website where you can go with the online bookings of railway tickets. And moreover, since it is a government organization, so there's less risk also, right? So it's secure method always. So what do we do? The first thing, we need to open up a browser, right? And then connect your computer to internet. Then go to the website of IRCTC. It is www.irctc.co.in. So type this on the address bar of the browser and press enter. Now the moment you press enter, you'll get the screen, right? So this is the official site of IRCTC. Now if you see here, we'll get a login area where you have to put up a password, user ID and password, then some captcha information, and then click on login button. Now this is required over here. Now for using any kind of services like booking a ticket over here, you need to have a login ID. And if you don't have a login ID, then you have to sign up. You can see sign up option is there at the bottom. So you just click on sign up, and then you have to create your user ID. For that you have to, there's a form kind of thing, and you just have to fill up the form. उसमें आपको अपने क्या यूज़र आईडी रखना है, क्या पासवर्ड रखना है, आपके जीमेल आईडी बताना पड़ेगा, आपका नाम लिखना होगा. तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर देयर यू हैव टू फिल अप. और उसमें होता है कि सम पार्ट इज मार्क्ड विद एस्टिक सिंबल. तो वो जो स्टार सिंबल है, एस्टिक सिंबल है, वो मैंडेटरी है, उन फील्ड्स को आपको फिल करना पड़ेगा. Once you fill that, then you click on submit button, your form will be submitted, and you'll जो भी आपने user ID password वहाँ पे generate किया होगा, जो fill up किया होगा form में, same user ID और password आप use करके you can open this account. That user ID you have to type over here, put that password over here. Captcha is the image that is shown over here. ये जो character यहाँ दिखे हैं exactly वैसे लिख देने हैं. D capital 3, R small, J small, 4 and I. तो ये कैप्चा इमेज यहाँ डालो और क्लिक करो लॉग इन. ठीक है, तो then you can easily log in. There's one more option like send OTP instead of captcha. If you don't want this captcha, if you're not understanding this,
सो आप इसको टिक करो। तो लॉगिन करने पे आपको पहले एक ओटीपी आएगा जो मोबाइल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ डाला होगा साइन अप में, उस मोबाइल नंबर के ओटीपी मैसेज आएगा। दैट मैसेज यू हैव टू फिल अप, देयर मस्ट बी ए कॉलम ओवर हियर एंड देन यू कैन लॉग इन। ठीक है, so this is how we log in. Once you log in, you can see this kind of screen. From here, you can see a form kind of thing. So this is your sign up option basically, कि sign up करते टाइम ये वाले कुछ options आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख मैं it's not so clear, so I'll read out. Username, the first thing that you need to enter. Then certain security questions are there. Then you have to choose one security question. This is required if you forget your password, तब ये security questions आपसे पूछता है। ये forget password हो जाए तो that time it is helpful. Then first name, you write your name. Last name, you write your name. Gender, you have to set your marital status. You have to give date of birth. You have to give occupation. Aadhaar card, you have to enter. Email ID, mobile number, nationality. So these are the things, these are the particulars which you need to fill up while signing up. So once you fill up everything, you'll sign up. Then you can log in with your password and ID. Right? So once you log in करने पे ये इंटरफेस दिखता है यहाँ पे on the left side. Again the image is not clear, so I'll read out. Left side में होता है ticket के information, like यहाँ से from and to option are there. From is from which station you want to search, start with the journey, and to will have from which station up to which station you want to plan a journey. ठीक है, मान लो टिकट बुक कर रहे हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग जो स्टेशन है और जो एंड स्टेशन है वो दोनों यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद डेट का ऑप्शन होगा और टिकट कैसी चाहिए, टिकट टाइप, इफ़ यू वांट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी और नॉन एसी, सच काइंड ऑफ कैटेगरीज आर देयर। वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। ठीक है, so once you submit you can find a list of all the trains available over here with their stations. ये फ्रॉम का मतलब है कि इस स्टेशन से वो चलेगी। इस स्टेशन के शॉर्ट नेम्स होते हैं। NDLS is New Delhi, NZM Nizamuddin likewise, right? So train name is also there, train number is also there, from, and what is the departure time, to what is the destination ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेन, कहाँ पे उसने जाना है, उसका टाइम क्या है वहाँ पहुँचने का, कितना डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना लगेगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? एंड देन यू कैन सिंपली select whatever you want, right? And moreover, if you see here, journey class is also available, 1A, 2A, 3A, SL. This is first class AC, second class AC, third class AC and sleeper class. So जो भी आपको चाहिए यहाँ से select कर दो, वही वाले options आपको यहाँ पे मिलेंगे, right? So choose whatever you want to choose from here and then select the category. Fine. And and if you want to check the price and other things of a ticket, for that what we need to do is just click on the train number. Like if this Punjab Mail is the first train, if you want to check what is the price and what is the fare of the this thing, the journey, टिकट का फेयर कितना है, तो आप इस पे इस ट्रेन नंबर पे क्लिक करो, विल गेट द इन्फॉर्मेशन फुल स्क्रीन, और उसमें वो सारी डिटेल्स होंगी, कितना फेयर है, कितना डिस्टेंस है, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी विजिबल. Moreover, it will also show you the availability, like do you, is the seat available in this particular train or not. ठीक है, तो availability भी है, तो availability कितनी है, so everything will get into that. Fine. So it also shows the ticket fare. So once you check everything, then next thing is I'll just show you, once you click, there's an option like if you see ये availability, मैंने जो बता रहा था availability, जैसे उन्होंने पहला एक पंजाब मेन वाला ट्रेन जो है उस पर क्लिक किया तो ये पंजाब मेल पे ऐसा दिखेगा. ये first thing is availability, on which date, the and what is the status of availability. RL is waiting, confirm होगा तो यहाँ लिखा होगा available,
ये कंफर्म नहीं है, ये वेटिंग लिस्ट में है। सो अगर आपको बुक करना है तो ये नीचे बुक नाउ पे क्लिक कर दो, ऑन विच एवर डेट यू वांट टू गो। दिस इज द फर्स्ट डेट, 26, 27, लाइक वाइज डेट वाइज ये लगे होंगे। जिस डेट को आपको कंफर्म करना है वो डेट पे नीचे click on that book now option. Fine. So then again you'll have a form kind of thing, and in that form you have to fill up your personal details, that is your name, age, sex, seat preference, birth preference, right? If you're a senior citizen, there's an option there for checking. You just click on that option. So senior citizens में होता है कि they'll get a bit discount on the price of the fare. So once you are filled with everything, just click on either you press enter key or you can press on the submit button at the end. Once submitted, once the form is submitted, then you have to make payment. Payment can be made in various forms, like you can use your credit card. There's an option there for payment. वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी हो सकती है। सो आप किसी भी ऑप्शंस पे सेलेक्ट करके उस हिसाब से पेमेंट कर दो। Once payment is done, then you can see the ticket on the screen. That is the electronic copy of the ticket, so that you can download from there to your computer, or you can transfer, or you can send it to your Gmail using a mail option का भी mail email option भी वहाँ पे होता है। और that's it, your form is registered, your seat is booked। ठीक है, as you see I'll show you the form। this is how the, ऐसे बुक पे क्लिक किया जिस भी डेट को, तो ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे नेम के ऑप्शन है, देयर यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द पर्सन हु आर ट्रैवलिंग, जितने लोग जा रहे हैं उनकी एजेस क्या हैं, उनके जेंडर्स क्या हैं, बर्थ की प्रेफरेंस क्या है, बर्थ है इसके लोअर बर्थ चाहिए कि अपर बर्थ चाहिए, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन यहाँ से टिक करना है। ठीक है, so likewise let these two options are filled। once everything is filled, then press enter and you'll find this kind of form where everything is shown, like fare, what is the fare, what is the total fare, what how much is the total amount made, वो सारा यहाँ पे आपको टोटल कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे पेमेंट के ऑप्शन हैं। अगेन इट इज ब्लर, सो आई रीड आउट। पेमेंट मोड में नेट बैंकिंग है, और क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, कैश कार्ड ऑप्शन है, या ईएमआई ऑप्शंस भी हैं। तो सेलेक्ट अ बैंक, यहाँ पे बैंक की एक लिस्ट है कॉम्बो बॉक्स में। यू क्लिक ऑन दिस एरो, यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द बैंक्स। जो बैंक आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करो, मेक द पेमेंट, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने सिटी बैंक का मास्टर कार्ड यूज किया है, राइट। सो मोमेंट इट इज सेलेक्टेड, ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन गए। So there you have to fill up the details of the card, like this is the Visa type card, what is the card number, what is the expiry dates, CVV number given on the card, name on the card, and you have to put up this captcha image and then click on submit button. There's a submit button or make payment option here. Just click on this, the payment is done, and then you can see the online ticket available on your screen, so that you can download and then you can save it for future use, or you can print it later on। आप उसको पीडीएफ या जेपीजी बना के सेव कर लो, और फिर उसको आप प्रिंट करके बाद में यूज भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ ऑल रिजर्वेशन काइंड ऑफ थिंग्स आर डन। फाइन, सो okay, so I'll just go through the next topic because we're left with 5 minutes. So let's cover up some more things and then we'll wind up. I'll just give you a flash idea what is the next topic. This next topic is e-governance. E-governance is electronic governance. Electronic governance where we use electronics, or in other terms we can say ICT tools. ICT is your computer tools like internet and even networks can be used, or mobiles can be used. So if you are using all such kind of things, IT tools, for giving the services of government for the to the citizens, अगर गवर्नमेंट हमें किसी तरह की सर्विसेज दे रही है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन आईसीटी टूल्स थ्रू इंटरनेट और थ्रू सम मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल एप्स, और थ्रू अ नेटवर्क, ऐसे सर्विसेज को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ई सर्विसेज हैं जो
हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, ज़्यादातर इंटरनेट के थ्रू आती हैं, या फिर मोबाइल ऐप्स भी हैं आर आल्सो देयर, राइट? फॉर एग्जांपल लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट, एज वी हैव जस्ट सीन, वो IRCTC गवर्नमेंट की साइट है और वो एक तरह के ई गवर्नेंस सर्विस ही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है। जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं हम लोगों के लिए ऑनलाइन, या यूज ऑफ विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ ICT टूल्स, such services are e-governance, right? So RTI application you can submit online, this is also one kind of e-governance, right? So that's all about e-governance. Now what all things are covered into it? So these services are broadly classified into two categories. One is to provide information, right? कि ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें सिर्फ सिटीजन्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करने के लिए या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसी सर्विसेज बनाई जाती हैं ऑनलाइन। और ठीक है, और दूसरा है प्रोवाइडिंग दी ऑनलाइन सर्विसेज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ऑनलाइन सर्विसेज इज वेयर यू कैन access the services of the government, and second option, the first option was to provide only the information. There you can only get the information कि क्या है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बताना चाहती है कि भी हमारे ऑफिस में ये सब चीज़ें हैं या ये जो ऑप्शन हैं, ये स्कीम्स हैं। अब उन स्कीम्स को अगर आपने यूज़ करना है तो वो दैट कैन बी डन विद द सेकेंड टाइप, जस्ट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज। तो जहाँ पे कस्टमर जो है या फिर जो सिटीजन है गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, ऐसे एक कैटेगरी वो है जहाँ पे कस्टमर अपने हिसाब से गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करता है। दूसरी कैटेगरी में सिर्फ गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है, उसमें जो सिटीजन है वो कुछ भी गवर्नमेंट से सर्विसेज नहीं ले सकता। तो ये दो तरह की कैटेगरीज हैं बेसिकली, ठीक है। सो इनके बारे में डेफिनेटली स्टडी इन द नेक्स्ट व्हेनेवर वी हैव द पीरियड। सो विल वाइंड अप हियर राइट नाउ। आई होप यू पीपल मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, वो समझ आया होगा। So that's all from my side today. Okay, so